Hey guys, good morning. This is Dawal here, and you are watching KD Architect. So, welcome to KD Architect. So, today in this video, we'll see something regarding schedule. So, in this video, we'll see how to create a window schedule and how to add the parameters of the windows like width, height, count, and the type mark value into the schedule, and how to create appropriate Windows schedule. We'll see step by step tutorial in this video. So for the better understanding, keep watching till end. So instead of wasting time, let's get started. Okay, so I have opened one sample project, and in this project, I have added some windows with the different types. So, in this video, we'll create a window schedule. So, whenever you want, you can create the window schedule in your project by following this process. Okay, so first of all, you need to isolate the window category. So, I am showing the simplest and easiest way to create the window schedule, and you can cross check whether all windows are included in the window schedule or not. So for this purpose, just I am recommending you that you should isolate the window category. So first of all, यहाँ से आपको एक window को select करना है and just will use the isolate category shortcut. So for that you can press the shortcut IC. ओके सो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जितनी भी विंडोज़ है वो सारी यहाँ पे आइसोलेट हो गई है। सो प्रोजेक्ट में जितनी भी विंडोज़ हो गई आप इजीली यहाँ पे आप उसको क्लियरली देख सकते हो। नाउ नाउ विल क्रिएट विंडोज स्केड्यूल। So for that, you need to go to over here in the view tab over here, and in the view tab you will find over here schedule. So यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है, and now here you will find schedule and quantities. Now this kind of dialog box will open, and यहाँ से आपको जो भी कैटेगरी का schedule प्रिपेयर करना है वो आपको यहाँ से वो कैटेगरी चूज करनी है. So suppose we are creating the window schedule. So over here we'll select the window. So यहाँ से let me show you one trick over here. Just आपको one click करना है कोई भी पैरामीटर के ऊपर. Just do one click. And now press the first alphabet of your category. Suppose हमारी यहाँ पे window category है, so यहाँ पे हम W प्रेस करेंगे. सो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से W की कैटेगरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप इजीली इस तरह से आप सर्च कर सकते हो जो भी कैटेगरी आपको सर्च करनी है. सो यहाँ से हम विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, नाउ विल क्लिक ऑन दी ओके. नाउ यहाँ से आपको जो भी पैरामीटर्स चाहिए वो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ से चूज करने हैं. सो लेट्स सपोज हम पहला पैरामीटर जो है वो हम चूज करेंगे यहाँ पे टाइप मार्क वैल्यू. सो यहाँ से टाइप मार्क के लिए सिमिलर प्रोसेस हम फॉलो करेंगे सर्च के लिए. सो यहाँ से कोई भी एक पैरामीटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं विथ जस्ट डू वन क्लिक, एंड नाउ यहाँ से हम टी प्रेस करेंगे. सो यहाँ पे टी की कैटेगरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से आपको डायरेक्टली वो जंप हो जाएगा यहाँ से. एंड नाउ यू कैन सर्च इजीली. तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास टाइप मार्क वैल्यू है. नाउ क्लिक ऑन टाइप मार्क वैल्यू, जस्ट टू वन क्लिक, एंड नाउ यहाँ से आपको ये जो ऐड पैरामीटर का सिंबल है ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट. सो लाइक दिस वे यू कैन ऐड द पैरामीटर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. सो यहाँ से राइट साइड में जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे पैरामीटर्स जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है. आई होप यू अंडरस्टूड. Okay, so now we'll add the further parameters. So we'll add second parameter, that is our width. So just do one click and search width W. Okay, so यहाँ से we have find out the width. Now add parameter. Now we'll add height. So यहाँ से we'll add height parameter. Now after adding height parameter, over here we'll add the count parameter. So for that over here we'll add the count parameter. So let's find out and add to parameter. Okay, now you can also add the another parameter as per your requirement. So for now just I am adding a few parameters, and we'll show you the how to create parameters. I mean how to add parameters in the window schedule and how to create window schedule appropriate way. Okay, now over here last parameter we'll add, that is our comment.
सो यहाँ से आप कमेंट का पैरामीटर भी ऐड कर सकते हो। सो जो भी कमेंट आपको टाइप करनी हो, आप पर्टिकुलरली कोई भी एक विंडो के लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो विद दिस पैरामीटर्स एंड क्लिक ऑन दी ओके। Now, as you can see, our window schedule has been prepared. Now, we'll do some settings in the window schedule. So, first of all, let me change the tile view over here. For that, I am using the WT command. Now, on the one screen, we have all windows, and another screen, we have schedule. Now, how to do cross check whether all windows of the project are added in the window schedule or not. So let me show you. So first of all, आपको यहाँ से जितनी भी विंडोज है वो आपको यहाँ से select all करना है in the isolate mode. So you will find over here we have 15 count of window. Okay. Now over here just select one, press shift and select last. So now यहाँ से जितनी भी विंडोज है वो आप यहाँ पे select कर लिए हैं. Now click on the 3D view. Just do single click. Now as you can see over here you have 15 windows. So the both count are matched. So like this way you can cross check the number of windows or all windows are added in the schedule or not, like this way. Okay, now we'll change some settings over here. So first of all, let me go to over here in the schedule, and now over here you will find some parameters. So just click on the sorting and grouping. Now over here in the sorting, over here we'll choose the type mark value, and over here we'll keep the ascending option. And now over here let me explain the itemize every instance. That means if we select this option, so यहाँ पे as you can see count में जो जितनी भी windows है वो सारी count में 1 है. अगर let me show you over here we have 20 type mark value, and over here we have dimension 26 by 5. The count is 1, but similar window we have in the project. That is a similar, as you can see in the second row. So this is also scheduled in the separate way. So this is the meaning of itemize every instance. अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन द ओके, सो यहाँ पे जितनी भी सिमिलर विंडो है, सिमिलर टाइप है, वो सारी यहाँ पे काउंट होके एक ही विंडो यहाँ पे शो करेगी. सो एज यू कैन सी टाइप मार्क वैल्यू दैट इज 20 and number of count are 6. So that is the meaning of okay. So let me go to over here sorting and grouping. So that is the meaning of itemize every instance. Okay, I hope you understood the meaning of this option. Now over here we'll keep the type mark and click on the OK. So like this way over here we have prepared the systematic schedule. Now we'll change the type mark value. If you have different values or random values in the type marks, so you can change the over here in the sequence or in the series. So how can you do that? So first of all आपको यहाँ से first type यहाँ पे select करना है and directly आप यहाँ से उसको change कर सकते हो. यहाँ से हम सारे टाइप मार्क वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन द ओके. नाउ यहाँ पे आप यू हैव सेकंड वे टू चेंज द टाइप मार्क वैल्यू. सो जस्ट सिलेक्ट द विंडो एंड क्लिक ऑन द 3D व्यू. सो एज यू कैन सी यहाँ पे वो सारे विंडोज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी एंड यहाँ से भी इन द एडिट टाइप you can change in the type mark, you can change over here. So click on the OK. So as you can see, so आप यहाँ से directly change कर सकते हो. This is the easiest way to change the type mark value of Windows. And click on the OK. Now we'll add 4. Now next one is 5. Next one is 6. Click on the OK. Okay, so now you if you see 1 2 3 4 5 6 in this series we have window type, and over here we have width, height and count, and over here we have type mark. So in the schedule we will not show the type mark. We'll see we'll display the name
like a window hashtag like that. So for that over here we'll go in the formatting tab and यहाँ से type mark value जो है in the field just select the type mark and यहाँ पे in the heading you can add the name whatever you want to show in the schedule. So now over here we'll uh, let's suppose let's add window. Okay, that's fine. And just add the hashtag symbol. That means this is our window number. Okay, like that, and click on the OK. So as you can see, now the window schedule is correct. Now, if you see in the project over here, we have different types of window, and this is our bay window. And if you want to see this particular window is our bay window, then just go to over here, edit type mark, and just find out what is the type mark value. That is our 5. So in the schedule, just click on the 5, and over here you can add the comment. Otherwise, you can add the comment in the window directly. Over here, you can add the bay window like that. Bay window. And now, and another, we have 2 skylight window over here. So just select the window and यहाँ पे आपको जितने भी सिमिलर टाइप है सारे टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा बिकॉज दिस कमेंट पैरामीटर इज इंस्टेंस पैरामीटर. सो सारे कंपोनेंट जो भी है सिमिलर सारे कंपोनेंट के लिए ऐड करना रहेगा. सो जस्ट सिलेक्ट वन कंपोनेंट एंड प्रेस द SA. सो सिमिलर टाइप एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएंगे. नाउ यहाँ पे आपको कमेंट में ऐड करना है स्काईलाइट. ओके, सो लाइक दिस वे you can add the comments. So as you can see in the comments, we have added skylight window. So if you see clearly, okay, now it's visible to you clearly. Okay, so like this way, you can add the, you can create the window schedule. So I hope you understood the all process of creating window schedule and how to add the parameters in the window schedule and how to add the comments for particular windows and how to cross check the all windows are added into the schedule or not. So I hope you understood the whole process. So if you really like our tutorial, please leave one like and share it with your friends. So wait for the another video. Have a good day. Bye bye. Thank you.